Namaskar, everyone. First of all, let me introduce that Universal Proudest Intellectual Federation UPIF platform we are at present. That is a federation of Proudest Universal. So today the topic is, so what lessons we have learned from Chandrayan 3 successful mission. This is the subject today. कि चंद्रयान 3 के सफल मिशन से हमने क्या सबक सीखा। सेलिब्रेशन का तो आलम है, आप सब महसूस करते हैं डे 1 से कि भारत चंद्रमा पर है, सारे भारतीय ही चंद्रमा पर हैं। भारत के अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर यान उतारने वाला चौथा देश बनने पर इतनी खुशी और गर्व है। नए प्रगति सहित पूरे क्षेत्र में राष्ट्रीय आत्मविश्वास को बढ़ावा देगा। उसका यदि तकनीकी पक्ष यदि हम लोग देखते हैं तो तकनीकी एक पक्ष को तो आगे बढ़ाती ही है। चंद्रयान 3 मिशन था, यह इसने साबित कर दिया है सफलता के लिए देयर आर सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स विच आर वेरी मच रिक्वायर्ड। और आज तो ये मनोविज्ञान भी मानता है कि विजेता वह है जो सोचता है कि वह कर सकता है। द विनर इज वन हु थिंक्स ही कैन। तो हमारे आदि पिता सदाशिव ने तो कहा है कि सफलता का जो पहला रहस्य ही है वो है फलिष्यातीति विश्वास सिद्धेर प्रथम लक्षण। मतलब मुझे अपने मिशन में सफल होना चाहिए, यह दृढ़ निश्चय ही सफलता का पहला रहस्य है। और जब सर्वोच्च के प्रति, विशेष करके किसी भी अपने फाइनल गोल के प्रति यदि इस तरह की दृढ़ निश्चय पैदा हो तो फिर मिशन में सफल होना ही होता है। यही सफलता का पहला रहस्य है। जो सॉफ्ट लैंडिंग वाज द चैलेंज एंड दिस वाज द गोल। ये अपने प्राथमिक उद्देश्य को हासिल करना था और वो हम लोगों ने किया। तो मिशन के कई महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति भी की, जिसमें एक नई लैंडिंग प्रणाली का विकास भी शामिल है। तो इन चीजों से हमको ये देखना है कि हम इससे क्या सीख लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो रहा टेक्निकल एस्पेक्ट्स। बियॉन्ड टेक्निकल एस्पेक्ट्स, व्हाट वी हैव लर्नड फ्रॉम दिस मिशन। सो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि यू कैन वॉलंटियर एंड स्टार्ट टॉकिंग ऑन द सब्जेक्ट टुडे। नमस्कार एवरीवन। नमस्कार दीदी। हमने पढ़ा था कलाम का, इफ यू आर नॉट फेलिंग एवरी नाउ एंड देन इट मींस यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इनोवेटिव। मतलब आप हमेशा फेल नहीं कर रहे हैं, गिर नहीं रहे हैं, हार नहीं रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ नया भी नहीं कर रहे हैं। आप पूरा जिस चीज में आपको एक्सपीरियंस है आप पूरे काम किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको हर बार जीत मिलती जा रही है, लेकिन आप कुछ नया नहीं कर रहे। आप जब कुछ नया करेंगे तो हो सकता है आप उसमें गिरेंगे, हारेंगे। तो ये एक चीज हम लोगों ने चंद्रयान 2 के मिशन में देखा। कुछ चीजें जो उससे गलतियां हुई उससे लोगों ने बहुत सीखा, और उस टीम में जो लोग थे उन लोगों में से 50% लगभग इस टीम में भी थे। जो नई टीम चंद्रयान 3 के लिए बनी उसमें बहुत सारे लोग थे, उनके पास वो एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस का लोगों ने लाभ उठाया और उस वक्त जो गलतियां हुई उससे सीख करके कि दोबारा वो गलती को नहीं किया जाए, सब लोगों ने आज विजय हासिल की है, जिसको हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं लगभग एक हफ्ते से। तो अचीवमेंट जब भी होता है तो हमें कुछ नया करने में हारने को भी तैयार होना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ जीत ही मिलेगी ऐसा नहीं होता है। जब हम हारने को तैयार होते हैं, गिरने को तैयार होते हैं, तकलीफों को सहने को तैयार होते हैं, तब जाकर के हमें जीत मिलती है। मुझे जो अभी तक इससे समझ आया या जो मैं सीख पा रही हूँ, मुझे लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है जो हम सीख सकते हैं इससे। आपका ये क्वेश्चन था, सब मुझे यही जवाब समझ में आया। धन्यवाद दादा। थैंक यू वेरी मच दीदी। ये बात सही थी और लर्निंग ये था कि इसमें ऐसी चीजें की गई थी। फॉर एग्जाम्पल जितने भी आवश्यक उसमें प्रणालियां थी उनको डबल कर दिया गया था ऑलमोस्ट, कि एक फेल, मेरा मतलब है कि प्लान बी वाज ऑलवेज रेडी इन दैट। सो दैट वाज द वंडरफुल थिंग जो इसमें था। हालांकि ये इतना स्मूथ गया कि प्लान बी की जरूरत नहीं पड़ी, बट दैट वाज द ग्रेट। एंड इवन बाबा भी कहते हैं दीदी कि फेल की तो बात ठीक है, ये व्यवहारिक बात है, बट इफ वी प्लान थिंग्स in a very proper way, methodical way, which was done third time, and if you ensure that जो चाहिए वही वहां पर है, and of course
technology is such a training and an experience. It all matters, and all were put together behind this success. तो ये जो है हर चीज पर लागू होता है. In any mission, when we want to be successful, we have to have a planning, a very solid planning. बाबा कहते हैं कि यदि व्यवस्थित ढंग से, ये तो लास्ट प्रवचन ही है द माइंड ग्रोज इन मैग्नीट्यूड में, कि यदि हम नियमबद्ध होकर के, आई मीन यदि यदि हम प्लानिंग करते हैं, इफ देयर इज अ रोबस्ट प्लानिंग, then there is a success. The probability is much higher of success. Madhusudanda, can you unmute and speak on the subject? I mean, what are the behind success and how can utilize in our social system? Thank you. Namaskar. Namaskar, Dada. Well, first I'll say I'm not really qualified to talk about the impact of this in India. But from outside India perspective, it's interesting because one of the things I was thinking is, I mean, the reaction from India has been universal, at least from what I heard. But imagine that instead of the Indian government landing this spacecraft on the moon, it was done by a private corporation. You know, let's say some Indian corporation had developed the spacecraft and landed this lander on the moon. Would there be the same type of reaction? This is what's happening in America. We just had a spacecraft launched yesterday from, Elon Musk's SpaceX. Just launched a crew to the space station. The space station is being run by the U.S. government, but the U.S. government has no way to get people there and back. In fact, for some years, it was being done through cooperation between the Russian government and the U.S. government. Now it's being done by SpaceX, and there's several other companies that are doing space launching. So space travel in the U.S. is being done by for-profit organizations, not by the government. So how is the benefit going to be, and what is the effect on society as compared to a publicly run program like the one in India? And of course, the Indian program, although it's not new, the accomplishment is somewhat new. Although I'm not sure that the U.S. space program is even able to do what the Indian government just did, because their technology is getting a little bit old. They're focusing more on Earth orbit type things and things than in space that will help us here. And again, that's what for-profit is. A for-profit organization looks at supply and demand and how can they benefit financially from this, and maybe get some government funding at the same time. And government does put some money into it, but it is really motivated and managed from a profit point of view. So I have mixed feelings. It shows our technology in the U.S. We used to be a leader in the world in this. I don't think we're so much in the U.S. anymore. We've fallen behind. Our education system is in trouble. The U.S. used to be the leader in science and technology. Now we're playing catch up in some ways. I'm not saying that any one country is better than another or any one country is worse than another, but any country could fall into the same situation. Same thing could happen in India, probably will happen in India. So it's you have to look at the thing in the broader context. I remember when the U.S. landed a man on the moon in 1969. I watched, I was enthusiastic, but I never felt that there was an accomplishment. Well, it was an accomplishment for the country, but I never felt happy for the country. I felt happy for science. To me, it was a tremendous scientific achievement, and just I was awed, really awed, and by seeing something that you thought could only happen in science fiction.
Pride for the country, maybe a little bit, but I was having difficulties with the country back then too. So different perspectives for different people. U.S. doesn't have the cultural affinity that you do in India. Anyway, I'll leave my comments at that. Maybe I can say some more later, Namaskar. Thank you, Madhusudhan Dada. Thank you so much. Even on moon, people are going to have a future plan. In Earth itself, plan is not good enough, but they are just rushing. So what I want to say is that civilization is going somewhere else and science is going somewhere else. And of course, it varies from country to country as well. But even if we see in a very broader sense, the science and civilization is not going hand in hand. Harandada, if you can speak on the subject. Yes. Yeah, very good observations made by the previous speakers. Let's think about the social impact at the macro level of this event, if there is any, and the psychological impact, what lessons we should learn as human beings across the globe. 20 years ago, I had the opportunity to visit ISRO campus and stayed there for 3-4 days when Mr. Madhavan Nair was the chairperson of ISRO. So that's a different story. They have maintained a very nice campus, well guarded also. When the story of Indian space research started about 60 years ago, the most important thing about the whole, so 60 years ago when the space research program was initiated by Vikram Sarabhai, the father of the whole space technology in India. He had located a spot, village called Thumba, and he went there. The area that he had selected as per his plan had a church and the bishop's house. So he went there. It was a Saturday, as narrated by Dr. APJ Abdul Kalam in his book Ignited Minds. It was a Saturday. He met the bishop and said, "Look, I want this space for my research, space research, and could you help?" He smiled and he said, "Okay, come on Sunday." So next day, the prayers were there, as we all know. So Dr. Peter Bernard Pereira was the bishop of that church. It was a Mary Magdalene church at Thumba, and a village of fishermen was there. So after the mass, the prayers, he said, "Well, gentlemen, science seeks," and I'm quoting this gentleman, "science seeks truth that enriches human life." These words are very important. And then he says, what Vikram is doing, that's what Vikram Sarabhai is doing, and what I am doing are the same. Science and spirituality seek the Almighty's blessings. Science and spirituality seek the Almighty's blessings for human prosperity in mind and body. These are the words of Dr. Pereira, the bishop. And then he says, can we give God's abode for a scientific mission? Then all the persons present in the church, they said, Amen. And then that's how it started. But then, so there was a district collector called Madhavan Nair. He was a different person from the person who was chairperson ISRO also. So what I could make out from this incident of 60 years ago is that efforts of 4 different stakeholders were put together, and there was complete, synergy of the church, the bishop, whose words are still echoing today. Science and spirituality seek the Almighty's blessing for human prosperity in mind and body. Can we give God's abode for a scientific mission? See the magnanimity of the bishop. I mean, it's remarkable the way things are going these days. See the magnanimity. So the religious leader joined hands for a good cause,
the father of technology, father of a space mission, joined hands. The collector, who was an IS, Madhavan Nair, ensured that the fishermen are resettled somewhere else, and this space is given to Vikram Sarabhai. And finally, the most important, the fishermen who were surviving and living on that piece of land in that village, readily agreed to give up their old homes and old place for such a good cause. So four major stakeholders have joined hands for this great mission when it took initiative in way back in 1962. This is Dr. Kalam's version in Ignited Minds. So it has to be true. I think it should be true. Yeah. So that is how it take off. First thing that I can learn from this is the concept of team building. Team building, when you join together for a good cause, for a benevolent cause, then for a collective cause which can benefit the entire humanity, the human race, a particular country also in this context, then there are divine forces which help you, because it was not an easy thing that a whole village of fishermen will agree to move out of that village and settle somewhere else. It was the initiative of a young IS officer who took all the trouble of rehabilitating them at some other location. So this is how things move when they start moving. First thing. Secondly, when I was going through I should say, foundational discourse of Sri Shan Murthy ji on 6th January 1958, 26th January 1958, given at Bhagalpur. That was the first speech that he gave on the occasion of foundation of Renascence Universal. He gave the speech as the president of RU. That was the first speech which has been published as Problems of the Day, around 28 pages. And I think every person who wants to contribute to some social cause, to the country, to the humanity, must read this chapter. It's an epoch-making discourse, and every word, every sentence matters. So in para 33, which is almost the concluding para, 34 comes after that, he says, and I must, I think, quote him verbatim because this is very important. He says, he talks about education. Now, the second lesson that I could learn from this, he says, no ism except universalism can be allowed in the educational system. He talks of universalism. And then he talks about six basic things which will make our society a knowledge society, which will make us advance towards social progress. Now let's understand these six things. First, he says, the thirst for knowledge must be awakened. This is the first duty of any educational system. Be it any stakeholder, a teacher, a parent, a peer group, a good friend can also ignite that fire of, learning things, knowing about nature and so many things. So he says the first thing is thirst for knowledge. The second thing, the word he uses is reverence. Reverence means, as I can understand, reverence for the teacher. For any person who is imparting knowledge, it may be a good friend, maybe father, mother, maybe some school friend, maybe a good book like Ignited Minds of Dr. Kalam. If you read that book, every paragraph is such that you keep on learning something from such books written by such great persons. And as rightly pointed out by Rajendra Dada the other day, he was one of the Sadvipras, the intellectual, moralist, Dr. Abdul Kalam. So second thing is reverence. Third, he says devotion. Here I understand devotion as commitment, die-hard commitment for goal. So goal clarity has to be there. I have been repeatedly harping on this point that the
young generation of the world is not clear about its goals. There is some goal obscurity, goal obfuscation, goal clarity is not there. So the goals must be well defined, well explained, and here the other stakeholders have to help have, the student, the boy or the girl. Next, he says orderliness. This is very important. Orderliness, though it's a part of discipline, but it has a different connotation and a different dimension. Orderliness means one has to go in a very structured way. Like at one place, I was going through one of the discourses. He says, if the task appears to be too big, do the segmentation, break it into parts. And then he says, if you find that there are too many stairs when you are going up a temple on a, say, mount, on a hill or hillock, if there are too many stairs, if the staircase is long and difficult, you move certain stairs, stop, and then move. Move, stop, move. It's a static game. You can't just rush through the, entire stairs, 300 stairs, and reach in the Jabalpur shrine. I don't remember the name. Anyway, fourth, he talks about discipline. We have been talking about this, and everybody knows what is discipline. So, discipline is hitarte shasanam, iti anushasanam. So one has to realize this. The problem with this whole education system is that when you try to enforce the discipline, people do not understand it in the right perspective. They think it is an imposition on them. So the best thing is to persuade, like the Socratic approach, as I say. He used to visit, in the evenings, he used to go at the main crossways of Athens. He used to, accost the youth and ask them questions. What is morality? What is truth? And then he used to elicit answers from them. And then he used to convince them, okay, look, this you have said about truth. Do you think it is correct? And then he used to argue and then ultimately persuade and convince the person. This is how Socrates went about, seeking knowledge and imparting knowledge. He was one of the greatest teachers and philosophers of the world. And after this discipline, the discourse talks about scientific outlook. So these are the 6 things that are crucial things. And I think all these 6 things have gone into this mission called Chandrayan 3. All these 6 things. Thirst for knowledge, which was ignited by our great person, Vikram Sarabhai. Reverence, if you look at the relationship between Dr. Kalam and his guru, Vikram Sarabhai, he says, every moment of his company was inspiring for me. This is what Abdul Kalam says about Vikram Sarabhai. If we look at the communication between Homi Jahangir Baba and Vikram Sarabhai, they had tremendous respect for each other. Though one was dealing with space technology, other was dealing with nuclear technology. Homi Jahangir Baba. And Baba was quite senior to Vikram Sarabhai. But they were very good friends. And I strongly recommend that the Netflix serial Rocket Boys must be watched by every person who wants to seek some knowledge of science. How great scientists have, worked the way out through difficult pathways. So devotion was definitely there. Otherwise, all of us know the first rocket had to move on a Belgadi. So, on a cart, bullock cart. Orderliness, yes. If we look at the lives of these great scientists, whether it's Bhabha or Vikram Sarabhai or Dr. D.S. Kothari or with any person you name, Ramanujan, S. Chandrasekhar, C.V. Raman, you name it, J.C. Bose, if you look into their personal lives, they were highly disciplined creatures, well ordered. They moved in a very planned and systematic way because, a scientist has to move in a planned and systematic way and scientific outlook. Now, one word which is used in this para 33 of this discourse, historic monumental discourse, as the founder of RU in 1958, he uses the word veneration for science. विज्ञान की उपासना, ठीक है, उपासना शब्द का प्रयोग मैं यहाँ नहीं करूंगा. It means great respect for science. And then he says,
It is only veneration for science that can fight dogma. This is very crucial, that these scientists have done a great service to humanity by fighting against dogmas. Now, ठीक है, चांद कभी हमारा मामा था. ठीक है, the artistic view of looking at moon could be that, but that is not the reality. The scientists have told us, okay, look, it's a rocky surface full of craters, and moon is only moon. It is not mama. So that is how scientists have, broken the myth. So all such myths have been broken by scientists. That is their great community, their great contribution in fighting dogma. So these are the things that I have. One more small technical thing, though I am not technically equipped to comment on it. That Chandrayan 2 failed because the fuel supply to the thrust control, was in excess. So the thrust control could not be managed properly. And then what happened? It took a 410-degree somersault, and the camera, when it came in the camera coasting zone, they call it camera coasting zone, when the camera indicates the place where it should land actually on the surface. So it's the role of a camera. So when the Chandrayan 2, that thing came in the camera coasting zone, the camera was pointing towards the sky. And ultimately it crashed 450 meters away from the site which was nominated, planned for landing. So the camera coasting zone of life is very important. When we enter a critical zone in our life, in our project, in our mission, when the focus should be on the area where we should land exactly, that if at that point of time we take a somersault, then we are in trouble. So the camera means the eyes. The human eyes must be focused on the goal, where we have to land. That is very important. Otherwise, moon has craters which are 8 kilometers deep. So moon has very large number of craters, and some are deeper than Pacific Ocean at times. And the biggest crater is 190 kilometers in circumference and 8 kilometers in depth. So one could land there also. So in life also it happens. If the camera coasting zone is not handled properly, if excess of fuel is there, or if less fuel is there, then the camera will look at the sky and will end up crashing somewhere on the dark, dry surface of the moon. So this is a very important lesson that I thought I have learned from this, that focus on goal is very important. Planning for goal is very important. And two things, courage and hope. The failure of Chandrayan 2, did not create that pessimistic impact on the scientists. They were not disheartened. They did not lose courage. They did not lose hope. These two things are very crucial in life. Courage and hope. So as Poonam Didi rightly pointed out, failures should not deter us from moving forward. We have to have courage, and courage has to be mixed with hope. We have to be optimistic that yes, good things will come. वो सुबह कभी तो आएगी, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर. Thank you. क्या बात है. Thank you, Dada. Thank you for a wonderful ending. But at the same time, you have took us around the history. And the one line is beautiful, that when the way Bishop agrees to these scientists, they never expected. And the statement is so beautiful कि वो तो अमर हो गया जिसको बोलते हैं. तो that is what we are talking. I mean, see the understanding of the bishop, that science is doing the same thing what spirituality is doing. So that was the beauty of it. Two very important things you told. They're learning from this is a team building. I will just go through the Raman Madhavan Nair, what you told. He has gave some interview to the PTI on the 24th, Press Trust of India. It was very interesting. But I would like to repeat what you told is that, see, kitna abhi bhi jo, sorry, there are people who cannot understand Hindi in Hindi.
So there is a global, synergy, the coordination. That is the beauty of it. And if this way world comes together, then of course the speed will be faster for any area of improvement. That universalism is building slowly because of the science development. Madhavan has made view, I mean, for the people who are surprising that how this is so cheap, the important is not that it is a successful mission. The important is the mission is such a, I mean, economical mission for world that is what is fascinating others. So, and if you find why we are fascinated, what Madhusudan Dara was asking, see, these are the scientists. I mean, it's a government organization. These are the scientists. They are getting salary. If you compare with any other developed countries at this level, they are getting 1/5 of the salary. You can understand. So it is not that the salary is important. The important is what the other team is spirit, but are passionate and dedicated to their mission. And that is the beauty, and that is what we are celebrating. And that is low and that is how we achieved greater heights. That's what Nair is saying. And careful planning, of course, was there, which has been discussed and very much available everywhere. And long-term vision, again, there is a vision. It is not that we are ending here. The cost of our satellite, the Chandrayan 3, is almost 50 to 60% lower compared to the space mission of other countries. And that is what is fascinating the world. And so these are very interesting points. See, the total cost, if you go in Indian rupees, is somewhere around 615 crores, something like that, which is too less if you see. So this was also the points I wanted to tell. Anybody else would like to comment? नमस्कार. Namaskar, you are audible also. अब यह तो जो विशेषज्ञ लोग हैं उनकी चर्चा का विषय ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपने पूछा है कि इस चंद्र मिशन से हमने क्या सीखा। तो सबसे बड़ी सीख है कि जैसा कि प्राउड का सेकेंड मूल सिद्धांत है कि देयर शुड बी मैक्सिमम utilization and rational distribution of all mundane, supramundane and spiritual potentialities. तो अब यह ब्रह्मांड जो है धीरे धीरे हमारे अर्थशास्त्र के दायरे में आते जा रहा है और यह एक बड़ी उपलब्धि है। चंद्र विजय के बाद हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ा है और वे अब ब्रह्मांड के अन्वेषण तक ही सीमित न रहकर उसके उपयोग की संभावना तलाश रहे हैं। अब चंद्रयान के बाद गगनयान, इसमें एस्ट्रोनॉट जाएंगे, अन्य ग्रह पर जाने के लिए स्पेस स्टेशन का निर्माण, ये सारी बातें अब कही जा रही हैं। आदित्य उपग्रह का प्रक्षेपण यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्षेपण होगा कि सूर्य की जानकारी के लिए इस आदित्य का प्रक्षेपण किया जाएगा। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही सौर तंत्र नाम की तंत्र की एक अलग शाखा रही है और जिसमें सूर्य विज्ञान पर बहुत ही अन्वेषण हुआ। खासकर ब्राह्मणों का एक समूह जिसे सारस्वत ब्राह्मण कहते हैं, वे सौर तंत्र के ही मानने वाले थे और आप जानते हैं कि यह आदित्य उपग्रह जो है, इन वैज्ञानिकों की योजना है कि
सूर्य के आसपास कहीं इस तरह का एक जैसे ट्रांसफार्मर टाइप का स्टेशन बनाया जाए जो सूर्य रश्मि को पृथ्वी पर भेजेगा और उससे बिजली की जो संभावना है, बिजली की संभावना यहाँ पर उससे पूरी की जाएगी। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि सूर्य रश्मि जो है वह तो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का मूल है। और इसी आधार पर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ सूर्य को लेकर यह कोणार्क मंदिर, अथवा कि हमारे बिहार में भी एक गया जिले में देव में एक सूर्य मंदिर है। और सूर्य के अन्वेषण में ही राजा जयसिंह ने जंतर मंतर, और जयपुर में भी इस तरह की यांत्रिक प्रणाली से सूर्य की गतिविधि और काल पर किस तरह से समय पर उसका प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीजें उन्होंने कहा है, बनवाया है। तो सूर्य एक विपुल भंडार है उसका। इसके अतिरिक्त बहुत सारी समस्याएं अभी हमारे सामने हैं। उदाहरण के लिए यह जल संकट, इस पर बाबा का जल संकट पर जो बाबा ने कहा है, तो उसमें तो एक मुख्य कारण हम लोग जानते हैं कि वन का उच्छेद जो है उसके चलते पृथ्वी पर जल संकट हो रहा है। और पूरी तरह से वन खत्म हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही बाबा ने और दो कारण कहा है जल संकट का। उसमें है कि बाबा कहते हैं कि प्रथम कारण जो है वह व्यापक रूप से पेड़ पौधे और जंगलों को नष्ट करना। और द्वितीय कारण बाबा ने कहा कि समंदर और महासागर के ऊपर निम्न चाप तैयार होने का प्राकृतिक नियम, ये प्राकृतिक नियम से होता है, इस पर हमारा कोई वश नहीं होता। और तीसरा कारण बाबा ने कहा कि सूर्य सहित अन्य ज्योतिष्कों जैसे धूमकेतु, नेबुला या गैलेक्सी की कोणीय गति में अचानक परिवर्तन जल संकट का कारण बाबा ने कहा। फिर बाबा कहते हैं कि पहला संकट जो है उसे तो हम लोग वनच्छादन कर और वर्षा का जल उपयोग करके उससे बहुत अंशों में हम मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन उसका दूसरा और तीसरा कारण जो है वर्तमान में मनुष्य के नियंत्रण के बाहर, ये बाबा कहते हैं। भविष्य में अंतरिक्ष विज्ञान और सामुद्रिक विज्ञान के विकसित होने पर लोग आंशिक रूप से द्वितीय कारण को प्रभावित कर सकेंगे या उससे छुटकारा पा सकेंगे। तृतीय कारण को नियंत्रित कर सकेंगे एकमात्र परम चैतन्य सत्ता। तीसरा कारण जो है कि धूमकेतु, नेबुला या गैलेक्सी की कोणीय गति में जो अचानक परिवर्तन होता है वह मनुष्य की क्षमता के बाहर है, उसे केवल परम सत्ता ही नियंत्रण में कर सकते हैं। बाबा फिर कहते हैं कि हाँ, लोग यदि पॉजिटिव माइक्रोवाइटा की राह पकड़ें और परम चैतन्य सत्ता की कृपा प्राप्त करें तो मनुष्य भी तृतीय कारण को नियंत्रित कर सकते हैं। जीवन के विकास की ओर से विचार करने पर दुनिया के इतिहास में दो हिमयुग उल्लेख योग्य। प्रथम हिमयुग के पहले पृथ्वी पर जीव लगभग थे ही नहीं, केवल अनुन्नत जीव थे। उसके बाद सब कुछ ढका रह गया बर्फ और तुषार में। प्रथम हिमयुग के समाप्त होने के बाद अनेक वर्षों तक चला विराट परिवर्तन, सभी जीव विशालकाय बन गए। और द्वितीय उल्लेखनीय हिमयुग के बाद विशालकाय प्राणी सभी अब लुप्त हो। तब आए छोटी आकृति के जीव।
तो बाबा कहते हैं कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर और एक हिमयुग आ रहा है। यह पृथ्वी के ढांचे में पूरा परिवर्तन लाए। इस हिमयुग के आने से पहले ये मनुष्यों और पशुओं, प्राणियों और अप्राणियों की सारी सत्ताओं में बौद्धिक और शारीरिक क्षेत्र में विराट परिवर्तन, रीतियों का परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक, अर्थनैतिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, जीव देह में परिवर्तन, यह सब कुछ तुम लोग देखो। सभी कुछ में रूपांतरण, दो मेरुओं के अवस्था में परिवर्तन शुरू हुआ। तुम लोग क्या इन सभी चीजों के लिए तैयार हो? आगामी हिमयुग के बाद क्रांति मंडल के क्षेत्रों में परिवर्तन हो और विपुल परिमाण में जैविक परिवर्तन, एक विशेष वर्ग की सृष्टि हो। क्या तुम लोगों को अनुभव हो रहा है कि ऋतु चक्र में बदलाव आ रहा है और उससे एक अव्यवस्था पैदा हुई है? उत्तर मेरु पूर्वी गोलार्ध में विपरीत क्रांति क्षेत्र की ओर हट रहा है और दक्षिण मेरु पश्चिम गोलार्ध में विपरीत क्रांति क्षेत्र की ओर हट जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके कारण जो पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तन आ रहा है और उसका हमारे जीवन पर जो प्रभाव पड़ने वाला है, तो उस दिशा में हमारी यह चंद्र विजय बहुत मायने रखती है, क्योंकि हमने अब ब्रह्मांड में प्रवेश कर लिया और हमारी वैज्ञानिक क्षमता इतनी प्रबल है कि हम बड़ी से बड़ी चुनौती को भी स्वीकार कर सकते। अन्य देशों के भी ये ब्रह्मांड विजय के अभियान चल रहे हैं, लेकिन उनके अभियान का केंद्र है अपना स्वार्थ, स्टार वार, और हमारा अभियान जो है वह लोक मंगल के लिए है। इसीलिए बाबा ने प्राउड को ग्लोबल प्राउड नहीं कहा, प्राउड यूनिवर्सल कहा। राइट। तो हम यूनिवर्स के लिए कर रहे हैं और यूनिवर्स को इसका लाभ होगा और हम बहुत आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैंने 2 लाइन का उस दिन एक संदेश लिखा था और मुझे बड़ी खुशी हुई कि बहुत लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी कि यह एक अंतरिक्ष में हमारी पहली विजय है, लेकिन हमारे हर कदम अब जय लाभ करेंगे। तो नमस्कार, इन्हीं शब्दों के साथ। डेवलपमेंट में आपने सोचा, जैसे कि हम लोगों का जो श्लोक है, स्थूल सूक्ष्म कारणेषु चरमोपयोग, तो स्थूल चीजों को ढूंढने में चंद्रयान का मिशन यस बहुत काम आएगा। और आपने ये भी बताया कि हम लोगों का पर्पस डिफरेंट है, बिकॉज सच डेवलपमेंट शुड बी फॉर द वेलफेयर ऑफ यूनिवर्स, सो अवर अप्रोच शुड बी यूनिवर्सल। जो आपने बोला, बाबा बोले हिमयुग आ रहा है, इसमें विराट परिवर्तन हो रहे हैं, हो तो रहे हैं, अभी सब लोग देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के नाम पे बहुत परिवर्तन हो रहे हैं और इवन मानसिक परिवर्तन विल बी फोर्स्ड टू टेक प्लेस एंड दैट टू इज टेकिंग प्लेस. So can I request Meera Didi to speak on the subject? You have raised the hands, please. नमस्कार दादा, नमस्कार टू एवरीवन। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दादा। हम लोगों को इसको प्राउटिस्टिक प्रोस्पेक्टिव में देखना पड़ेगा। किसी भी चीज के लिए, जैसा कि आपने सब्जेक्ट रखा है कि ये जो सक्सेस है इसको हम लोग किस तरीके से समझेंगे या लेंगे, हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस पर ध्यान देना। किसी चीज के लिए अगर आपने सोच लिया, कहा जाता है करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुसार, रसरी आवत जात से सिल पे पड़त निशा। ये हम लोगों के लिए है, हम प्राउसिस्टों के लिए है। समझना है कि उन लोग साइंटिस्ट, इसरो के साइंटिस्ट ने उनकी जो रिजिडिटी, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कर जाने की के पीछे जो उनकी जो मंशा थी, आज उन्होंने करके दिखाया बहुत ही कम बजट में। तो इस चीज को हम लोग
विन करना है, उस चीज को हम लोग उनसे सीखेंगे। हम जिस पथ पे चल चुके हैं तो उस पे अब हमको पीछे कदम नहीं मोड़ करके देखना है। प्राउडिस्ट हम लोग हैं, तो प्राउड के लिए जो हम लोगों का डिटर्मिनेशन है, इससे भी ज्यादा होना पड़ेगा। उनका, जैसा कि दादा दादा बोले कि उनका प्रोस्पेक्टिव स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल शायद नहीं है या है, उस पे मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन हम लोगों का है कि यूनिवर्सल समाज हो, पूरा विश्व ब्रह्मांड हम लोगों का, हम लोग एक हो। तो उसके उस पथ के लिए हम कितना आगे कर सकते हैं, उनकी जो क्षमता थी उसके बियॉन्ड जा करके हमें भी अपने आप को उसके बियॉन्ड जा करके सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये हम लोगों के लिए भी एक लेसन है कि अगर सक्सेस हो सकते हैं, अगर कोई उनका इतना विल पावर, इतना कंबाइंड एफर्ट एक के करने से तो नहीं हुआ। डेफिनेटली उसके पीछे कितने हाथों का सपोर्ट होगा, कितने सिर्फ साइंटिस्ट हमें सामने देख रहे हैं, उसके पीछे कितने लेबर का काम होगा, कितने लोग मीडियोकर होंगे, कितना साइंटिस्ट उनका ब्रेन को कैसे सक्सेसफुल करना है। तो चारों तरफ से जो उन लोगों का जो था एक डेडिकेशन, एक समर्पण करने का, ये समर्पण हमें सीखना पड़ेगा। किसी चीज को कर गुजरने के लिए जो उनका इच्छा शक्ति प्रबल थी, वो इच्छा शक्ति हमें अपने आप में लाना पड़ेगा। तो मैं उसी संदर्भ में देख रही हूँ कि जैसे वो कर रहे हैं, हम क्यों नहीं, तो हमें उनसे ये सीख लेना है एज अ प्राउडिस्ट। थैंक यू सर। Very good, Didi. That was the aspect of this discussion actually, that apply the lessons of Chandrayan 3 for social upliftment mission. Basically, if you go then, जिस तरह से उन्होंने कोलेबोरेटिव नेटवर्क किया, सो ये एक बहुत ही हम लोगों के लिए लर्निंग था, और इससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, इनमें कई ऐसे क्वालिटीज थे। मैं यदि एक एक करके गिनाऊं तो कोलैबोरेटिव की बात हम लोगों ने देखा, एजुकेशन एंड इंस्पिरेशन कितना था। ये मिशन सक्सेस होने के बाद जी दादा, इस फील्ड में लोगों का जो है, दिस ऑल क्वालिटीज कैन बी applied to the social upliftment mission, can focus on education as a means for empowerment by promoting access to the quality of education, vocational training and skill development हर एरिया में। ये जो जैसे दादा ने शुरू में बताया, there are the 6 principles for successful any kind of mission, and that was the purpose. And yes, people should be motivated by human feelings, human sentiment, and that was seen here. And that was the, and then global cooperation, हम लोग जो यूनिवर्सलिज्म की बात करते हैं कि so just space exploration जो demands international cooperation, ऐसा नहीं है। So social upliftment mission can also encourage collaboration between the countries to address global challenges like poverty, health crisis. I am taking to the other aspects now. And environmental sustainability, sharing best practices, resources, expertise can amplify the impact of such mission also on a global scale. Our world needs a great change in order to move forward and progress. So a new order, a new wave will have to take the place of the old to remedy all the physical, social, intellectual, spiritual ills of the world. And as vanguard of this new movement, the youth are indispensable. जैसे दादा ने भी बोला, and Baba used to, the first address was to Proudist, on Proud platform was to the youth, to the students. So it is the youth and the youth only who have the vigor to bring about the necessary changes. It is the youth who have the resilience to change and adapt and implement the vision of the new society. And without this vision, without the youth, the world will continue in the morass of suffering, injustice, and exploitation. That is our present social condition. And so the youth has to be bring forward, and the world, and if the youth of the world only who can help bring about the new world order and the vision of the new humanity,
So we have to look after the youth. You can see the scientists, all were almost youngs. And कहते हैं ना सदविप्र तो कभी बूढ़ा ही नहीं होता है. So that was also visible there. So then कुछ measuring aspect की बात आती है इसमें. देखिए डेटा कहते हैं ना कि डेटा कभी झूठ नहीं बोलता. The data never speaks lies. This is also a learning. So things which is monitored is bound to improve. So logic and reasoning जो ये चीजें हैं ये बहुत important हैं. So we should always collect data because we had old data and we build upon those old data of Chandrayan 1 and 2. This mission was successful. Yes, Darshan Dada, you want to say something? Thank you. नमस्कार सर. Namaskar. नमस्कार. तो मैं थोड़ा देर से ज्वाइन किया था. कोई बात नहीं. Tell your views. What is the learning from this Chandrayan mission which we can implement in our proud or our movements? ये चंद्रयान जो मिशन जो हम लोग इस बार लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 3. चंद्रयान 3 जो मिशन था, ये इससे पहले हम लोग चंद्रयान 2 जो मिशन था वो फेल होने के बावजूद भी हम लोग इसको सक्सेसफुली इसको कर पाए. तो ये जो मिशन था इसमें सबसे पहले जो इसमें जो गलती हम लोगों ने पाया था पहले वाले में, उसको फिर रिपीटेडली हम लोगों ने मेहनत करके उसको सुधार कर इस तरह का इतना कॉस्ट इफेक्टिव मिशन हम लोग जो भेज रहे हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो कहा जाता है. इंडिया इज एन एस्पिरेशन फॉर ऑल दोस, मैंने जो भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है वो सबका एक एस्पिरेशन है. तो इससे पहले एक तो मेरा प्रीटेक्स्ट में देना चाहूंगा कि इससे पहले जो ये LVM-3 जो रॉकेट के माध्यम से इसको उड़ाया गया, ये LVM-3 को मैंने ये जो रॉकेट है इसमें जो हमारे अभी सोमनाथ जो है जो चेयरमैन है इसरो के, उनका इसमें हाथ रहा है वो LVM-3 को डेवलप करने में. लेकिन ये जो क्रायोजेनिक इंजन जो भारत में आया है इसके लिए इतना संघर्ष करना पड़ा था क्योंकि रशिया जब ये हो रहा था, रशिया का डिसइंटीग्रेशन जब हो रहा था, तो उस कारण जो रॉकेटरी, यदि आप लोगों ने फिल्म देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि नंबी नारायण ने कैसे करके ये जो है क्रायोजेनिक मिशंस को भारत में लाने के लिए कितना मेहनत करके 5 जो एयरक्राफ्ट में उसको रशिया से लोड करा के सिर्फ उसके बाद फिर उसके जो ड्राइंग है उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके बाद फिर इसको दिया गया. और ये मिशन सब जो भी हुआ इसमें इसके पीछे बहुत एक संघर्ष की कहानी है. तो एक एक करके कैसे करके भारत जैसे जो बहुत ही इतना कॉस्ट इफेक्टिव मिशन जो भारत दे रहा है और उसके साथ में जो भारत का जो वर्ड है, संस्कृत का वर्ड है, उसका भी प्रचार हो रहा है. जैसे चंद्रयान, आदित्ययान, शिव शक्ति, ये जो दुनिया इस सब जो संस्कृत के वर्ड को सुन पा रही है, इसके लिए भी साइंटिस्ट लोगों का बहुत बड़ा धन्यवाद और नमन है. और ये जो सोलर मिशन, ये जो मिशन है, इस मिशन में जो सोलर पावर का यूज करके 14 दिन तक चलेगा जो अभी, और उसके बाद फिर -200 डिग्री सेंटीग्रेड में यदि ये सर्वाइव कर जाता है तो अगला 14 दिन तक ये सर्वाइव कर पाएगा. तो ये जो लूना 25 जो मिशन था जो रशिया का फेल हो गया, वो मिशन में वो लोग जो एक टेक्नोलॉजी यूज किया है, वो टेक्नोलॉजी RTG करके एक टेक्नोलॉजी यूज किया जो रेडियो एक्टिव जो एमिशंस का मतलब वो लोग 1 साल तक उसको सर्वाइव कर पाता है. तो वो भी अभी DRDO के माध्यम से उसको भी अभी फिर से डेवलप करने के लिए इंडिया में ये चल रहा है. तो एक न्यू पूरा हाइट दे दिया गया है. मतलब अब जो है भारत का जो 1/5 ऑफ द वर्ल्ड को जो रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन, मैंने जो वहाँ इतना बड़ा पॉपुलेशन को जो रिप्रेजेंट करता है, वो जो है इतना बड़ा मतलब और उतना कम रुपया में, चूंकि हम लोगों का जो टेम्पर जो है पहले के जो है साइंटिफिक टेम्पर रहा है, लेकिन भारत एक जो है उसके बाद फिर एक गुलामी के कालखंड में ये सब खो गया. और उसके बाद पैसा इतना कम रुपया होने के बावजूद भी, जिसके बारे में बहुत से जो अलग अलग कंट्रीज वाले लोग इसके लिए मॉक भी करते रहे, जैसे ग्रेट ब्रिटेन जो है वहाँ का जो नेशनल टीवी है उसमें ये बोला गया कि हम लोगों को भारतीयों को इतना जो हम लोग फंड दे रहे हैं उसका ये लोग मिस यूटिलाइजेशन कर रहे हैं. इन लोग को ऐसा पैसा देने का नहीं है, क्योंकि ये जो पैसा का यूज कर रहे हैं स्पेस पावर यूटिलाइजेशन. तो
तो ये अब उनका एक इस तरह का सोच है, क्योंकि उन अलग अलग कंट्रीज को लग रहा है, क्योंकि ग्लोबल पावर्स में इतना सस्ता में यदि कोई आदमी लोग इस मिशन को कैरी आउट कर रहा है, तो इतना ज्यादा सैटेलाइट्स जो है गरीब कंट्री के लोग के लिए भी अवेलेबल करवा पा रहा है भारत। तो क्योंकि भारत का सोच ही एक अलग तरह का सोच है, और वो सोच को आगे बढ़ाने में और ये बहुत बड़ा एक बूस्टअप का काम करेगा। और आने वाला टाइम में मैं ऐसा आशा है कि 3,84,000 किलोमीटर जो है इसको 615 करोड़ में यदि तय किया जा सकता है, तो यहाँ के जो छोटा छोटा डिस्टेंस है वो भी अब मतलब छोटे छोटे जो उड़ान के माध्यम से वो सब का भी प्लानिंग चल रहा है। तो हम लोगों को साइंटिफिक टेम्पर जो डेवलप हो रहा है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर राजनीति और ये सब की चर्चा में रह जाते हैं, और ये एक अलग दृष्टिकोण में ले जाता है आदमी का सोच को। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग भी इस तरह की चीज़ को बूस्टअप करें, और छोटा छोटा यदि हम लोग चाहें तो क्विज उज का यदि इसी माध्यम से हम लोगों को मौका मिलता है तो करवाना चाहिए बच्चे लोगों को, और उन लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि इस डायरेक्शन में कि हाँ ये भी एक अलग दुनिया है। थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच। आप सही बोले दैट our attitude is very different if you compare with the other side of the world. But at the same time, again, I'm repeating that science has to go along with civilization. And if you see the long-term vision, just as the Chandrayan 3 mission required a clear vision and strategic planning, same social upliftment mission should as well define goals and long-term visions. This ensures that effort remains focused on sustained over time. So today, there is a many disparities in society. Let us, what the purpose was to, if this kind of enthusiasm is diverted towards the social upliftment, the civilizational upliftment, then I mean things will be very different. And in true sense of the term, we will be the developed countries. And just by doing yes, every success have the same ingredients requirements. So we have proven that we have these ingredients. So let us, solve the problems of disparities in many fields. For example, there is a disparities in birth. I'm talking of our local concern, biological disparities. Now there is a sex disparities. Political life is so much one group people exploiting other group. Economic life, you can see the extreme inequality and exploitation. And similarly, education should be free, and it should be based on universalism. And the psychic word dogma is quite rampant in our country. So these are the mental ailments. We have to address with the same enthusiasm. And learning lessons from the successful moon mission, that is, protests will have to raise their voice against this kind of disparities on social sphere as well, with the same enthusiasm, with the same learning, what we could see in Chandrayan as a team spirit. And they will have to do it now. They will have to do it immediately. And Baba says, I also desire that you all should move on the path of renaissance, which is fully supported by rationality from today and from this very moment, and let victory be yours. So our vision has to be Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Na Kaschit Dukh Mapnuyat. Let everybody be happy. I'm talking of the civilization part. Science, fine. Let everybody be free from physical or psychic ailments. Let everybody see the bright side of everything. And nobody should be forced to undergo trouble under the pressure of circumstances. So we have to stand in science, of course, and civilization as well. So by embracing these strategies inspired by the lesson of Chandrayan 3, social upliftment mission,
can effectively address a wide range of social challenges, empower communities, mission dedicated to the social upliftment, have the potential to unite society in pursuit of a better future for all.